Hello class, you all are having your book now. So again we will do Amanda. I have written on the board. So first stanza we have completed. Now second stanza you all just see. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. So I was telling you this is Amanda's story, and in which her mother was commanding. Commanding for what? Not to do that, not to do this. So she is now fed up with all the things, and I told you something is given in the brackets like this. I told you something is given in the brackets. So we call that parenthesis. I told you it is called parenthesis. Okay, so if you will count 1, 2 and lastly 3. So 3 parenthesis stanzas are given, and 1, 2, 3 and 4. And 4 general stanzas are given in this poem. And here Amanda was fed up with the statements of other people. Not only other people, here in this poem her mother was commanding. So here first of all she said, don't bite your nails, Amanda, don't hunch. Hunch I told you ना, bend करना, अपने shoulders को bend करना, अपने shoulders को bend करके ऐसा move on नहीं करना. And instead of that Amanda's mother said कि कैसे move straight चलिए. And like this only again after first stanza, then second stanza of parenthesis. Okay, then after again second stanza. So in second stanza, did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? So again mother was asking, Amanda, have you finished your homework? अपना homework finish किया and अपने room को tidy means clean. Okay, tidy means clean. Have you cleaned your room, Amanda? Room को clean किया? I thought I told you to clean. I think मुझे लग रहा था कि that I said to clean your shoes also. So have you cleaned your shoes? Have you cleaned your room? So here who is asking? Her mother. So I am orphan, roaming the street. I pattered soft dust with my husked bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. So again I am. I means just Amanda. And again orphan. Here orphan means Amanda has a mother, but here Amanda is saying orphan. Orphan means all alone. Orphan means all alone. No one is going to disturb her. All alone. Here, okay, यहाँ पे all alone के लिए दिया गया है. Roaming the street, I pattern. Pattern means to make. Pattern means to make. Pattern means to make. And one more word is given, husked. Husked means to quiet. Very quiet. Okay, so the silence is golden. Here she is saying na कि oh my God, I told you na कि whenever her mother commands her and she went in another world, and in that world is called parenthesis. इस world को parenthesis कहते हैं. And Amanda saying कि oh my God, काश मैं all alone होती ना, मुझे कोई भी डांटता नहीं, मुझे कोई कमांड नहीं करता. एंड रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं इस ऐसे प्लेस पे होती जहाँ मैं स्ट्रीट्स में रोम करूँ. एंड आई पैटर्न, और मैं क्या करूँ? पैटर्न करूँ, मेक करूँ. वॉट? सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड एंड बेयर फीट. बेयर यू नो, विदाउट हैविंग अ स्लीपर्स. बेयर मीन्स विदाउट हैविंग अ स्लीपर्स. विदाउट स्लीपर्स.
So here Amanda is saying कि काश मैं अकेली होती ना और बिना स्लीपर्स के मैं पैटर्न बनाती, बियर फीट से मैं पैटर्न बनाती. पैटर्न यू नो, सो मैं डस्ट पे जब जब मैं अपने पैर को रखती सो पैटर्न बनता. सो हियर शी वेंट इनटू एन अनदर world in which she wants to be alone, means orphan, and she wanted to make pattern जिससे अपने क्वाइट चुपचाप स्टिल रहने वाले बेयर फीट से, जो फीट भी शोर नहीं करते. सो शी डज नॉट लाइक टू हैव नॉइज फ्रॉम समवन्स माउथ. किसी के माउथ से कोई भी वॉइस वो नहीं सुनना चाहती. वॉइस इन द सेंस कमांड, नो कमांड शी डिमांड्स. वो उसकी डिमांड थी नो कमांड्स मस्ट बी देयर इन माई लाइफ इवन, ओके, इन सच अ गर्ल्स लाइफ. ओके, सो बेटा रिमेंबर, सो इन द फर्स्ट स्टैंजा शी मीन्स आई टोल्ड यू कि उसको नेल्स को बाइट करने के लिए मना किया गया एंड शोल्डर्स को स्ट्रेट करने के लिए कहा गया. एंड इन सेकेंड स्टैंजा अगेन उसकी मदर सेड, हर मदर सेड कि टू complete your homework, to clean your what room and shoes. ओके, सो उन दोनों को क्लीन करने के बाद, इसके बाद देन आफ्टर शी वेंट इनटू पैरेंथेसिस. वो अपने पैरेंथेसिस में मीन्स इन्वर्टेड कॉमास, अरे सॉरी दैट ब्रैकेट वाले पैसेज स्टैंजा में जाती है, जिसमें वो अपने आप को अलोन फील करती है, चाहती है कि पैटर्न वो मेक करे एंड अपने वाइट और बेयर फूटेड फीट से. ओके, सो अगेन इतना ही कहने के बाद नाउ इट इज़ ऑल ओवर. डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने. अमांडा, विल यू प्लीज टू कैट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. अमांडा. So here Amanda, 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 always Amanda, for something, for everything, for nothing, means always Amanda. So here in this you can note down the acne. Acne, I think you all know very well. Acne means pimples, pimples. So here mother is just prohibiting you know, मना करना. वो prohibit करती है कि that don't eat chocolate too much, बहुत ज़्यादा chocolates नहीं खाइए, because remember your acne now means you are having the pimples and you are having chocolates. No more chocolates. Will you please look at me? Please मुझे देखो. You just turn your face in front of me whenever I say something new, whenever I tell something new. So you just turn your face and look at me what I am saying. Who is saying? Her mother.